Hello friends, I hope you are keeping well in this pandemic situation. Situations are worsening everywhere, so stay home, stay safe and keep preparing. So students, there are many of you who have questions as to how to do well in reasoning. Logical reasoning basically. So many of you must be good in maths or in English or in some other subjects, but reasoning is a very new subject. What happens to us, we did not study this in our school level, है ना. क्लास 11 12 तक we did not have reasoning बोल का कोई subject था. So this is very new to us. What to do, how to study, how to prepare well in our reasoning, that is what we are going to discuss in this video. So let's start a discussion. This might be a question for many of you who are appearing for the competitive exams कि कैसे reasoning को अच्छा करते हैं, how to do well, how to go about reasoning all through. So this is what we are going to discuss here, right? So firstly, students, what you have to do is you have to be aware of the syllabus. देखो, अगर सिलेबस ही पता नहीं होगा ठीक तरह से, then we won't be able to proceed with the subject. तो पहले ही हम लोग को पता चलना चाहिए कि हमारा रीजनिंग का सिलेबस क्या क्या है. पहले देखो, these are the few things that we already know: alphabetical order, series, coding, decoding, direction, blood relation, syllabus, statement assumption, and puzzle and sitting arrangement. These are few common topics that I have already written down here. So you will be aware कि बहुत सारे competitive exam में ये सब आता ही है. Okay, for IBPS, PO, SBI PO, RBI, ये बहुत सारे competitive exams में these are the common topics that we have. So पहले ही क्या करना चाहिए? We have to be aware of the syllabus that we have. Okay, थोड़ा थोड़ा topics मैंने यहाँ पे लिख दिया है. If you want, you can take a screenshot of this, no problem. Okay, so I'm writing here aware of syllabus. Aware of syllabus. ठीक है, तो हमको पहले ही पता चलना चाहिए what is the syllabus. Next we have to do fast action. Now what do I mean by fast action? देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए टाइम बहुत कम होता है ना हम लोग के पास. So since we are lacking such a lot of time, what we have to do, we have to speed up. We have to speed up a lot. बहुत जल्दी करना है, तो इसके लिए फास्ट एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. थोड़ा धीरे धीरे बैठ के आराम से करेंगे, so we won't be able to solve our paper since time is very less. You have 35 minutes for most of the reasoning papers and time is very less, students. So it is very important. हम तो छोड़ नहीं सकते कोई question भी. That will be a loss for us since we are appearing for the exam and our target is to crack the exam and be successful. I'm sure many of you must, if you follow this video, definitely you will crack the exam. So what you have to do is you have to be very fast in your exam. वेरी फास्ट, जल्दी जल्दी करना है, पर इतना हड़बड़ी नहीं कि सब कुछ गलत कर दो. नो, रीजनिंग में थोड़ा टाइम लगता है, पर समझने में थोड़ा टाइम लग गया, और इफ वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन, सो व्हाट विल हैपन, वी आर गोइंग टू वेस्ट टाइम. सो इसलिए आई एम सेइंग फास्ट एक्शन. क्वेश्चन करो फटाफट, यू विल हैव योर आंसर पेपर. एक पेज होगा ना तुम्हारे पास एग्जाम के लिए, वो पेज में फटाफट लिख लो क्या क्या तुम्हें जॉट डाउन करना है, तब you will be able to answer all your questions very fast. Okay, third point I will discuss. Practice. Now why is practice important? तुम लोग को लगेगा अरे रीजनिंग का इतना सारा चैप्टर्स है, शायद 10-12 चैप्टर्स है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट है ना कि मेरा तो सारा चैप्टर्स लर्न हो गया है, मैंने लॉजिक समझ लिया है ना, well to go through. But this is not going to happen. If you do not practice in reasoning,
you will not be able to get high marks in your competitive exam. And आजकल जैसे कट ऑफ बढ़ता ही चला जा रहा है, so it will be very difficult for us to crack the exam. What I will say for your practice is, practice इसलिए करो कि स्पीड बढ़े. शायद हो सकता है सम तुम्हें पता है, शायद एक सम करने में तुम्हें 10 मिनट लग जाए, but if you go on practicing and practicing and practicing, what will happen? The same sum जो पहले वाला दिन 10 मिनट में कर रहे हो, 5 दिन बाद देखोगे वही वाला sum, the same sum you are doing it in 4 or 5 minutes. तो क्या हमारा टाइम बचा ना? तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो टाइम ही नहीं होता है. तो जितना प्रैक्टिस करेंगे हम, जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज 10 सम, 10 से इंक्रीज करो 15 सम, तो जितना प्रैक्टिस करोगे you will be getting efficiency in your paper, right? So practice is very important. As you know, it is already said that practice makes a man perfect. It is very well said. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एफिशिएंसी तुम्हारा बढ़ेगा. Next, solve as much as questions possible. Solve as much questions possible. जो भी मटेरियल है तुम लोग के पास, ऑब्वियसली फॉलो दैट. वहाँ पे चैप्टर होगा, सम्स होगा, एक्सरसाइज होगा, देन यू गो थ्रू नेट. नेट में भी बहुत सारा क्वेश्चंस होगा. यू गेट बुक्स ऑल्सो हियर एंड देयर, इधर उधर, या पेपर वालों के पास मिलता है ना बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बुक. सॉल्व वॉट एवर क्वेश्चंस यू आर गेटिंग. एक बुक से करोगे ना, सो इट वोंट बी सफिशिएंट. हाँ, 10-12 सम होता है वहाँ पे, मैक्सिमम 20 होगा. सो यू प्रैक्टिस देन. ऑब्वियसली द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बिकम. बहुत सारा क्वेश्चंस करो, टाइप्स अलग होगा, देखने में आएगा कि अरे सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा मैंने किया है, ऐसा पजल तो मैंने किया नहीं. तो फिर पजल में बहुत सारा टाइप्स होता है. सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है ना, यू गेट ऐसे राउंड टेबल में बैठा हुआ है ऐसा बोलता है. देन आइदर दे आर सिटिंग इन अ लाइन, फर्स्ट कॉर्नर, लास्ट कॉर्नर में, ऐसा क्वेश्चन आता है. तो शायद तुम देखोगे आई हैव प्रैक्टिस, अरे मैंने तो ऐसा वाला प्रैक्टिस किया, ऐसा तो कभी किया ही नहीं. तो एक बुक से करोगे ना, तो तब पता चलेगा, तब पता ही नहीं चलेगा कि ये ऐसा था, ऐसा हो भी सकता है. because there are many books who gives you a lot of questions. So the more books you will practice, the more materials you will get, the more perfect you will be in solving reasoning. ठीक है? Next we will go to one very important point, that is dedication. Students, dedication is very important for our reasoning. अगर हम ध्यान नहीं देंगे, if you are not concentrating कि कैसे हमें reasoning करना है, कितना टाइम करना है, dedicated नहीं रहेंगे, so we will not be able to score well in our reasoning paper. क्यों dedication important है? Because reasoning is very new to us. ये पहले हम नहीं किए थे. Logical reasoning जो बहुत सारे competitive exam में आता है, that is very new to us. So इसको समझने में टाइम लगेगा, इसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, एंड डेडिकेटेड रहना पड़ेगा. You cannot skip anything or you cannot just lose your focus in logical reasoning. हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे. ठीक है? So what will happen if you be dedicated towards reasoning? I'm sure 35 में से 35 you will be able to get 35 out of 35. And trust me, 35 या बहुत सारे एग्जाम्स में उससे ज़्यादा भी होता है. And scoring 35 out of 35 will not be very difficult for you. पहले तो थोड़ा difficult लगेगा ही, because it is new to us, as I already told you. But if you are dedicated, hard work करोगे, then it is very easy for us to score well in our reasoning paper. Right? और एक चीज बोलना मैं भूल गई. What happens is, dedication से भी बहुत ज़्यादा important है is smart work. Hard work करो, definitely hard work is very important, but smart work is also important.
कभी कभी ऐसा होता है, यू गेट दैट आंसर पेपर इन योर एग्जाम्स, आंसर एक शीट लेके जाते हो ना एग्जाम्स देने के लिए, तो क्या होता है, वी सी द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अ स्क्रीन एंड वी जस्ट इमेजिन, अच्छा अच्छा ये ऐसा ऐसा होगा तो फाइन ठीक है ऐसा कर लेते हैं। नहीं, वो अगर करोगे ना तो व्हाट विल हैपन, दिमाग, आवर ब्रेन इज वर्किंग ऑन समथिंग, एंड इफ वहां पे रॉन्ग हो गया, पिक्चर है दिमाग में ठीक है, बट दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू डू। बहुत बार 90% चांसेस है वहां पे गलत हो जाता है। सो व्हाट वी हैव टू डू, द पेपर दैट वी हैव, वहां पे छोटा छोटा करके स्क्रिबल कर लो, जो क्वेश्चन दिया हुआ है अपना तरीके से वहां पे लिख लो, फॉर्मेट कर लो। होता है ना कि ब्लड रिलेशन में सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, सिटिंग अरेंजमेंट होता है, तो वो करके एक फॉर्मेट बना लो। सिटिंग अरेंजमेंट होता है, फिर ब्लड रिलेशन में ट्री होता है ना, तो ये मैंने ट्री दिखाया है यहाँ पे ब्लड रिलेशन का, तो ये ट्री करके वैसा फॉर्मेट बना लो, तो ताकि इजी हो जाए तुम्हें समझने में, बिकॉज दिमाग में सब कुछ पिक्चराइज करोगे, देन व्हाट विल हैपन, ये कुछ गलत इधर से उधर हो गया, सो आवर आंसर विल गेट रॉन्ग। तब फिर से या तो समझ में नहीं आएगा कौन सा आंसर सही है, या तो कुछ उल्टा पुल्टा टिक कर देंगे, उससे क्या होगा, हमारा मार्क्स लूज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट क्या हो सकता है, आफ्टर डूइंग वन चैप्टर एंड मे बी सॉल्विंग 10 सम्स, हम लोग को ये लग गया कि चलो ये चैप्टर मैंने अच्छे से कर लिया एंड आई एम फाइन टू गो थ्रू दिस, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी बैंकिंग क्वेश्चंस में या बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ट्विस्ट करके क्वेश्चन देता है, so what will happen, we must have been very competitive, we very serious enough, और बहुत कॉन्फिडेंट था हम लोग को कि मैंने ये चैप्टर किया, बट एग्जाम में जाके पता चला अरे ऐसा भी तो होता है, ऐसा क्वेश्चंस भी आता है, तब तो कुछ कर नहीं सकते ना, वी कैन नॉट टेक चांसेस फॉर दैट। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट रहो, बहुत अच्छा बात है, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है ना, वी विल लूज वॉट एवर वी हैव डन, प्रैक्टिस बेकार चला जाएगा, एक्शन सिलेबस पता होता है तब भी कोई काम नहीं आता है। ओवर कॉन्फिडेंट विल not help us in getting good marks or scoring a better marks in our reasoning. Okay, so I will advise you follow all these 6 points, these are very important, and also lastly I will add smart work. स्मार्ट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, हार्ड वर्क करो, पर हार्ड वर्क से भी स्मार्ट वर्क बहुत मैटर करता है। रीजनिंग नया है हम लोग के लिए, दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर, तो अच्छे से करो, स्मार्ट वर्क करो, ये 7 पॉइंट्स फॉलो करो, एंड आई एम श्योर यू विल बी फाइन टू गेट थ्रू रीजनिंग। सो बहुत सारे पीपल जो डाउट्स होता है तुम लोग का, हाउ टू डू रीजनिंग, कैसे करेंगे, कैसे फोकस्ड रहेंगे, रीजनिंग का सिलेबस क्या है, आई थिंक योर क्वेश्चंस आर ऑल आंसर्ड हियर, एंड इफ यू फॉलो ऑल these 7 points, I am sure you will be successful in reasoning. That's all for today. I hope you liked the video. Stay safe, stay happy, and keep practicing for your competitive exams. Thank you.